30,000 वर्ग फीट लगभग हेक्टेयर भूमि नजूल भूमि अभिलेख में दर्ज। उक्त ब्लॉक की भूमि में वर्तमान में एक मस्जिद का निर्माण एवं बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया है। यहाँ के आसपास के निवासियों द्वारा बताया गया कि कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पर छोटी मस्जिद थी। प्रश्न ये है कि मुसाफिर खाना कहाँ से आया? अगर ये मान भी लिया जाए कि मस्जिद लीगली एग्जिस्ट करती थी और आपके पक्ष में था, dispute is only about this Musafir Khana, not about the masjid. नहीं सर, वो now that major demolition activity was carried out today morning. अगर कोई illegal construction carry out करा जाता है तो वो revenue authorities with great respect have no jurisdiction and right to go into it. The power, the jurisdiction right exclusively with the municipal corporation to give me a show cause notice if I am not able to satisfy them and demolish my property. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश शासन तरफे हल्का पटवारी ग्राम कस्बा इंदौर तहसील जूनी इंदौर जिला इंदौर के द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की 1959 की धारा 248 के तहत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें लेख कर अवगत कराया कि ग्राम कस्बा इंदौर अंतर्गत अनसर्वेड रेजिडेंसी क्षेत्र में स्थित सीआरपी लाइन क्षेत्र के ब्लॉक क्रमांक 12 क्षेत्रफल 0.70 एकड़ अर्थात 30,000 वर्ग फीट लगभग हेक्टेयर भूमि नजूल भूमि अभिलेख में दर्ज है। उक्त ब्लॉक की भूमि में वर्तमान में एक मस्जिद का निर्माण एवं बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया है। यहाँ के आसपास के निवासियों द्वारा बताया गया कि कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पर छोटी मस्जिद थी, वो आसपास की भूमि खुली थी जिस पर वर्तमान में अतिक्रमण किया जाकर मुसाफिर खाना एवं बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया। नंबर दिस presumes two things. One, that based on the information randomly collected by the residents of the locality, which has led to the conclusion of the Tehsildar, excessive construction has been undertaken beyond the permissible limits. One, which brought with great respect cannot form the basis of either a show cause notice or a finding by the revenue authority. Secondly, it presupposes that the land in question is a government landlord. Yes. I will show to you, Lordship, how this is not a government landlord. And then I'll come back to the impugn order, not just first on this question only, Lord. Your Lordship will not kindly turn to annexure P4, Lord. P3 and P4, Lord. Yes. Lord, P3 is not very legible, but suffice it to say that it's a Nazul maintenance khasra, wherein the Kabzadar has been mentioned as CRP police line masjid, Lord. But area, what about area? We are not disputing that there was a masjid, but the area was smaller. You Yes, enlarged that area by including the government. Yes, Lord. So we are not Confined only... within this area. Yes, Lord. So we are not restricted to 30,400 square feet only. Now, Yes. unfortunate part is that the government agency has included two khasra numbers and shown any other excessive construction to be a part of my excessive construction, Lord. I am restricting myself only to survey number 12. Everywhere, as far as my documents go, it's survey number 12 only, Lord. And I'll come to you, Lordship, I'll come to those orders also, including the show cause notice, how they presume that other areas are also within my umbrella, which is not true, Lord. Your Lordship, has P3 made the first connection. Yes. So, Lord, the area is 30,400 Kshetrafal. And in the sixth column is CR Police Line Masjid. This is residential Kshetra. Then, Lord, on this next page, Your Lordship, please to find the Awqaf register, Lord, which certifies the fact, in my respectful submission, that this is a Waqf property. Your Lordship has got page number 23, Lord? 23. Yes, Lord. It looks somewhat like this, Lord, if I can show it to Your Lordship. P4. Annexure P4 or P3? सर वो 3 का ही पार्ट है सर, वो P4 थोड़ा सा आगे है, वो ओल्ड रिकॉर्ड है, मैं उस पर भी आता हूँ, ये P3 का ही पार्ट है सर। P3 का पार्ट जी, हाँ। जिसमें सर ऊपर लिखा हुआ है नकल रजिस्टर रजिस्ट्रेशन औकाफ वाक़े। इसमें now on the sixth column, your lordship will be pleased to see item number 4, the mention of this very masjid. Item number 4, not your lordships have it, not? Yes. Masjid Central India Agency Police Line Chhavni, Masjid CRP line, then Janib is side Shumal plot number is taraf ye, and on the next column, that is column number 7, your lordship would be pleased to see the khasra number categorically mentioned as 12. But area is everywhere 30,400. Yes, Lord. The area of the masjid, with subsequent permission where the Musafir Khana is made, is restricted to 30,400 only. Now, Lord, this is the khasra number. So, therefore, Lord, my first submission is the property prima facie I was able to show to the Tehsildar subsequent to a show cause notice that there exists an Awqaf register stating the property to be a Waqf property. Now, unless the government was in a position to file a document in rebuttal stating that this is not a Waqf property but vests with the government either by way of a civil court declaration
or by way of any other documentation, there is a presumption in my favor of the property being Waqf property, Lord. Thereby Yeah. meaning, Year, Mr. Bagre, year is not mentioned in this document, page 23. This is Nakal register of which year? सर ये लेटेस्ट रजिस्टर है, इसके ऊपर इन्होंने ईयर मेंशन नहीं करा, बट वी कांट टेम्पर विद दिस डॉक्यूमेंट बिकॉज दिस इज हाउ इट रीड्स इन द औकाफ रजिस्टर, लॉट. दो इन कॉलम नंबर 14, लॉट, देयर इज अ रजिस्ट्रेशन डेट, लॉट, कॉलम 14, लॉट, ऑफ माय रजिस्ट्रेशन. सेम डॉक्यूमेंट, लॉटशिप, कॉलम 14, लॉट. 21st February. Yes, ये मेरे registration date. Now it's not open to me, Lord. Your Lordship would now not coming to annexure P4, which your Lordship is pleased to mention, Lord. P4, Lord. P4, P. Yeah, sir, page 25. Yes, sir, आप ऊपर देखेंगे मेंटेनेंस इंदौर नगरीय क्षेत्र रेजिडेंसी क्षेत्र, ये 1964, 65, 66 का रेवेन्यू रिकॉर्ड. Yes. इसमें सर डिटेल देखें. कॉलम नंबर 2 में अगेन खसरा नंबर मेंशन्ड है. कॉलम नंबर 3 में क्षेत्रफल है 30,400 स्क्वायर फीट. कॉलम नंबर 5 में सर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में क्या, और कॉलम नंबर 6 में फिर से सीआरपी पुलिस लाइन मस्जिद का जिक्र है. Yes. अब सर दो डॉक्यूमेंट मैंने दिखा है. अब प्रश्न ये है कि मुसाफिर खाना कहां से आया. अगर ये मान भी लिया जाए कि मस्जिद लीगली एग्जिस्ट करती थी और आपके पक्ष में था, so the question is why मुसाफिर खाना. Not for that query I filed 2 documents brought which were a part of the record before the learned single judge as well, but annexure P5 for a minute. क्या है 30,000? 0.70 क्या है? Sir, what is 0.70? हेक्टेयर सर, वो 0.70 हेक्टेयर है सर. वो स्क्वायर फीट में ट्रांसलेट करके 30,400 हो जाता है. हम हेक्टेयर माने इसको 0.70, तो इसका एरिया 30,500 नहीं आ सकता. इसका एरिया तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा. ये दोनों जो है माप लिखिए, दे आर रॉन्ग. जी. Either 0.70 wrong or 30500 wrong, because there are 5 biga and 1 hectare, and there is 22,500 square feet in 1 biga, and 0.70 will come. एकड़ लिखा हुआ है इम्प्यूग्ड ऑर्डर में. So there is, but this cannot. 70 एकड़ लिखा है. both are 70 एकड़ सर, एकड़ हो तो फिर तो परफेक्ट है. 30,400 एकड़ करीब करीब 44,000 स्क्वायर फीट का होता है, तो एकड़ होगा फिर. आई एम सॉरी, either 0.70 is wrong or 305 सर एकड़ ही है. नॉर्मल एकड़. वो 30,492 आता है सर. 0.70 एकड़ जो है एकड़. जी, I stand correct. I am obliged to your lordship. I stand corrected. So when I come to the 2 permissions which assume relevance and significance. Dispute is only about this Musafir Khana, not about the masjid. नहीं सर, वो now that major demolition activity was carried out today morning after the dismissal of my petition, Lord. Now masjid remains, and we've been threatened by the authorities that if we do not demolish that mosque, they will come and demolish that mosque as well. So essentially, it has been demolished, Lord. So Bagaria, Lord. which finding of the report is coming in? Yes, Lord. Before that, may I just refer to the 2 documents? I'll only hold your lordship back for a minute. The question is, are you arguing on merit or you want to go before the appellate authority? Yes, but I bow down to your lordship, Lord, for the query. Lord, 2 things. If your lordship is not inclined to entertain, Lord, my submissions on merit, Lord, that till the time that I am able to file an application and that application is adjudicated by the appellate authority, may your lordship be pleased to grant me protection, Lord, of 20 days. Dealing your matter on merit, first you will have to satisfy why the alternate remedy is not an efficacious remedy. Why Yes. the observation of the report is wrong. Yes, Lord. Now, Lord, 2 things, Lord. Only, Lord, again, requesting your lordship, Lord, indulgence for half a minute, Lord. Would your lordship turn to, Lord, P5 and P5, Lord. Both documents at P5, page 27 and page 30, Lord. And I'll not bother your lordship by reading it, Lord. Suffice it to say, it's a municipal corporation permission, survey number. Your lordship is P5, not page 27. Yes, 27. जी सर, आप देखेंगे ये सर्वे नंबर 12 मस्जिद कंपाउंड, और इसके नीचे सबसे नीचे डॉक्यूमेंट के लिखा है मुसाफिर खाना. मैं सिर्फ ये दर्शाना चाहता हूँ कि मुसाफिर खाने की वैलिड परमिशन कॉर्पोरेशन द्वारा दी गई थी 2003 में, जिसके बाद मुसाफिर खाना बनाया गया. Meaning everything is permissible, but within 30,000 square. जी Not beyond that. जी हाँ, वो सर Here area is mentioned is भूखंड क्षेत्रफल 3106.42. यस सर, मेरा निवेदन 2 है. पहला तो ये है कि अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कैरी आउट करा जाता है तो वो रेवेन्यू अथॉरिटीज विद ग्रेट रिस्पेक्ट हैव नो jurisdiction and right to go into it. The power, the jurisdiction right exclusively with the municipal corporation to give me a show cause notice if I am not able to satisfy them and demolish my property. The usurping of the jurisdiction by a revenue authority, encroaching upon the power and eating into the power of the corporation is not permissible. They are 2 separate government departments which are supposed to function in 2 different streams of administration.
That is my first submission. और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई नोटिस मुझे कभी नहीं दिया गया, नहीं तहसीलदार के इंप्यून ऑर्डर में लिखा। इनफैक्ट आप शोकॉज नोटिस सर जो प्रिसीड कर रहा था इंप्यून ऑर्डर को, शोकॉज नोटिस में भी कहीं जिक्र नहीं है कि आपका कंस्ट्रक्शन इलीगल है। एनेक्सर P1 सर, P1 P7 is a show cause notice. यस लॉर्ड, P7। अब इनका देखिए सर बेसिस क्या है, मैं सिर्फ ये दर्शाना चाहता हूँ मैलाफाइड इंटेंट सर। Yes. यस लॉर्ड। और दैट शोकॉज नोटिस जो P7 जो मैं लॉर्डशिप से निवेदन कर रहा था, इसका बेसिस देखे शोकॉज नोटिस का सर। Yes. इन्होंने बाद में फाइंडिंग रिकॉर्ड करी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं, P7 सर। एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि अनसर्वेड एरिया रेजिडेंसी के सर्वे के दौरान किसके द्वारा करा पता नहीं कब, अब रीजनिंग 6, 11, 12। अब डेलिबरेटली सर क्या होता है कि जो रेवेन्यू अथॉरिटीज है वो 3 सर्वे नंबर को इंक्लूड करती हैं कि 12 में तो कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन से बना है, लेकिन 11 और 6 और 11 में ऐसा लगता है कुछ अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है, तो उसको भी इंक्लूड कर दिया, वो हमको एट्रीब्यूट कर दिया। एक मस्जिद निर्मित है। अब देखिए सर, उपस्थित कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर सीआरपी लाइन के जवान के क्वार्टर स्थित हैं, कुछ वर्षों पूर्व यहाँ पर छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी, शेष खुली भूमि पड़ी हुई है, लेकिन वर्तमान में 40,000 वर्ग फुट भूमि पर बाउंड्री वॉल बनाकर निर्माण कार्य कर लिया गया है। ये लोगों के द्वारा बताया गया, नो इंडिपेंडेंट सर्वे। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार उक्त भूमि अनसर्वेड रेजिडेंसी एरिया की भूमि जो कि नजूल भूमि शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है। Pause for a moment only to request your lordship to go back to the permission, not go back to the revenue records, which clearly stated that this is not a government land. How did it become a government land? We don't know. No notices were sought. There is no mutation order. और आखिरी में सर बेदखली का है कि आपको बेदखल कराया जाए। Count is 1 minute. Sir, In which paragraph you have stated that you have not raised construction over 4,000 square feet? In which paragraph of the writ petition you have Yes. stated that your Yes. construction is not over 40,000 and Yes. it is over 30,000? सर ये 1.2 में मैं इस स्पेसिफिक टर्म में नहीं लिखा, पर मैंने कहा कि वक्त प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी है। They are saying that there is construction of 40,000 square feet. You should say that this is wrong and our construction is only over 30450. सर You should state this and otherwise you cannot challenge here. मैं मेरा रिक्वेस्ट है लॉर्डशिप टू टर्न टू यस सर, आई एम सॉरी। They have stated in the notice on the basis of oral information, but you can state here as per your demarcation, as per your measurement. Sir. Before coming to the court, you should measure your property, over which part your property is constructed. Then you can say, their notice is illegal and there is pleading with the support of the affidavit. सर मेरे पॉइंट Nothing यस is there in your petition. Yeah. How Yes, we can say that is wrong? yes, sir. Until even in the pleading, you are not stating anything. Sir, may I take your lordship lord through my reply of the show cause notice, sir, जिसमें लिखा है? मैं show cause notice के reply में मैंने लिख के दिया। No, in the petition you have come here. You Sir. are challenging that notice. Then in the writ petition, you should say that this notice is wrong because our construction is 3050. And this, the contention of the council, corporation, that the construction is over 40,000 is wrong. At least this should be one paragraph or 2-3 lines in the writ Sir, petition. I bow down to your lordship completely. But apart from the show cause notice, I have also challenged the final order passed in pursuance of the show cause notice. And then it will be a fact finding inquiry. You are not even stating the fact with your petition. You have come to the court. Sir, The first time, you should state that thing. Sir. Their contention may be wrong, but what is your contention? sir. Now, may I take your lordship through only the reply to the show cause notice, sir? जहाँ मैंने specific terms में लिखा, मैं I bow down to your lordship कि वो specific line मेरी petition में नहीं है. But not let that not be held against me for the simple reason. But that can be, that has been taken into consideration by the Tehsildar. And नहीं sir, नहीं वो नहीं लिया sir. And again the मैं आपको वही निवेदन करता हूँ. I'll take your lordship through the तहसीलदार order also, उसमें कहीं नहीं लिया उन्होंने. against the order of Tehsildar, you have come here, then you should state everything. You should dispute each and everything in the petition, factual part or in the ground part. Nothing Yes, is sir. there in the petition. I completely not bow down to your lordship on that observation note, and I cannot
change what is not written, or I can add what is not written and not change what is written. How can you dispute or how we can presume that the notice is wrong? सर वो क्योंकि मैंने जवाब जो दिया था नोटिस का, एक बार सर वो जवाब पर देख लें, एक बार मेरा छोटा जो है Exercising the writ jurisdiction that to in writ appeal, and there is no pleading. not the learned single judge Lord, with great respect, has not dismissed my petition on account of non pleading of a certain fact, Lord. Of course, your lordship's Lord query is absolutely pertinent and Lord absolutely right on that point. But I have not been dismissed on non pleading of that fact. You are exercising the writ jurisdiction, you are not stating anything, you are not disputing anything Lord, which has been mentioned in the notice. For Bagadia, there is no admitted fact on which the writ court can exercise the jurisdiction. Unless there are admitted facts. Lord, Only the interpretation of law is required. But Yes. now there is a boundary dispute, there is a area dispute, there is a now title dispute also. So the writ is not the appropriate remedy as the rightly held by. not just if your lordship, yes, sir. By saying one, you should say our construction is over 3,000 something and this is not over 4,000. That area is about 10,000 square foot area, which is in dispute at present. So Ji. you have not stated anything, Yes. and I think this Sir, is Ji. necessary. Ji. May I have not only take your lordship through the reply to the show cause notice, Lord. And this has not been held to be an incorrect reply by the Tahsildar. Now, if this reply would have been held to be incorrect, it was incorrect. Otherwise also I am required to mention it, but what are the reasons? But you have come to the High Court, you should say something in your writ petition. You I should say completely- something in your writ appeal. Yes, Lord. I completely bow down to your lordship. Now, may I take your lordship through the reply, Lord, for a minute of the show cause notice, Lord? Yes, sir. Ye reply एक बार, which is annexure P8, Lord. Your lordship has the reply, Lord? P8. Yes, Lord. इसमें भी डिस्प्यूट नहीं किया, you have not disputed कि ये 40,000 वाली बात जो लिखी है वो गलत है, हमारा 40,000 पर नहीं है, 30,400 पर, ये भी लाइन, एक लाइन तो लिखना पड़ेगी। सर वो आप पैरा 2 सारा परमिट करें, पैरा 2 एक बार पढ़ देता हूँ। थोड़ा सा कम लिखा है, मतलब थोड़ा कम लिखा। सर वो लैंग्वेज डिफर करती है हर व्यक्ति की। ऑफ कोर्स योर लॉर्डशिप एक्सप्रेशंस वी कैन नेवर मैच, लॉर्ड। वी आर नॉट सो एस्ट्यूट एंड सो लॉर्ड एक्सप्रेसिव इन आवर यूज ऑफ वर्ड्स। Second chance was given to you by drafting the writ petition. Suppose you did not say anything in that reply. सर मैं एक बार पढ़ दूं पैरा 2 और पैरा 4, सर उसमें क्या लिखा है एक बार We have read. जी। ये कि उक्त भूमि 1967 से ही मस्जिद एवं इंदौर वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज है, जिसका कुल क्षेत्रफल 30,400 वर्ग फीट है तथा उक्त संपत्ति पर कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 17/6 को अनापत्ति दी गई कि उपरोक्त निर्माण विच मींस कंस्ट्रक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू 30,000 स्क्वायर फीट, पुलिस विभाग जिला प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं जिसकी प्रति संलग्न है। देन लॉर्ड अगेन पैरा 4 हमारे द्वारा, योर लॉर्डशिप इज पैरा 4 लॉर्ड, Yes. ये कि हमारे द्वारा शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई अवैध कब्जा निर्माण नहीं किया गया है। मस्जिद की भूमि का कुल क्षेत्रफल 30,400 वर्ग फीट है जिस पर मस्जिद मुसाफिर खाने का निर्माण किया। Evasive, this is evasive in the light of that direct allegation against you that you have raised construction over 40,000. You are not saying we have not raised over 40,000. Our construction is 3,400. At least this should be the credited. सर ये लाइन नहीं है कि आप गलत कह रहे हैं 40,000 है, बस बाकी तो सब है कि 30,000 पे कंस्ट्रक्शन है। आप देखें पैरा 4 में सर ये लिखा है, वो आई एग्री विथ योर लॉर्डशिप की वो लाइन मिसिंग है कि आप गलत कह रहे हैं, वो नहीं लिखा। वो अथॉरिटी से सर कई बार कन्फ्रंटेशनल होने की इच्छा इसलिए नहीं होती कि रोज काम पड़ता है इनको अधिकारियों से, तो वी डोंट वांट टू प्रूव देम रॉन्ग। Only thing we are trying to, your lordship would appreciate, only thing what we are trying to show is that we are within the limits of the permissible construction. That is why we did not say कि आप गलत कह रहे हैं। Yeah. Now, Lord, going back to Lord, just the one collector's order, your lordship already has gone through, Lord. The permission of construction, Lord. Yes. That Lord is annexure P3, annexure P5, Lord. Yes. P5. Lord. Now this shows an NOC P5, Lord, your lordship has. Yes, but it is within 3106 square meter with 1.5 FAR. No, sir, इसमें कई area का, your lordship, Lord, perhaps is referring to a different document, Lord. I am referring to P5. Para 6. No, sir, that is a different document. Yeah, sir, ये कलेक्टर का आदेश है। ये है ये बिल्डिंग ऑफिसर का है P5 पेज 27। इसमें परमिसिबल कंस्ट्रक्शन एरिया इज 987 स्क्वायर मीटर आउट ऑफ 3106। जी जी जी, ऑल एक्टिविटी शुड बी लिमिटेड विद इन दैट एरिया। मैंने सर एब्सोल्युटली मान लिया। मेरा निवेदन ये है, yes lord, only lord, your lordship as well please to point out that 3,100 square meter translates to 30,000 square feet, got one, and P5 not at page 3030. Yes. Your lordship is P5 not page 30. Sir, yes, P5. Which it has permission है कि now the collector states
that this permission is being granted for permission after taking NOC from all relevant departments. Yes. Only trying to show not that we are a bona fide possessor and holder of a property with a title in our favor. I'll take a note through not the entire, but suffice it to say कि सारे विभागों का जिक्र करा कलेक्टर ने परमिशन देते हुए. Now two things will emerge. Yes. Number one, there is no recalling of the collector's permission or the municipal corporation's building permission at any point of time. One, there is no notice by the corporation, which is the actual authority, who can question any construction or treat it to be an excessive construction. There is no authority beside the municipal corporation who can take cognizance and look at the fact whether there is an illegal construction or, because they don't have the paraphernalia and the technical know-how to do so. So corporation is not bothered, the collectorate is not bothered, the Tehsildar issues a show cause notice based on some random opinion of people who are living there, and the Tehsildar based on that show cause notice passes the impugn order, Lord, and that is based on, I'll just tell you, Lord, state before this honorable the finding, Lord, of the Tehsildar. Lord, may I request you to turn to page 17, Lord, 17, P1 ka page 17. Yes. सर थर्ड पैराग्राफ जो बिगिन होता है प्रकरण में 17 मैं रीड में Yes. अनावेदक शाबिर हाशमी कार्यपालन अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किया, जिसके अनुसार एमवाई अस्पताल के पीछे सीआरपी लाइन के ब्लॉक क्रमांक, अब फिर से 3 सर्वे नंबर का जिक्र है, शोकॉज नोटिस में भी यही प्रॉब्लम है। कुल 40,000 क्षेत्रफल पर मस्जिद निर्मित है, जो कि 67 से ही मस्जिद एवं वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज है, एवं जिसके संबंध में लेख है कि उक्त संपत्ति पर कलेक्टर महोदय द्वारा 17/6/94 को अनापत्ति दी गई। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दे मेंशन टू द परमिशन बाय द कलेक्टर की उपरोक्त निर्माण से पुलिस विभाग जिला प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है। इस पूर्व उल्लेखित बिंदु से पूर्णतः स्पष्ट है कि वह स्थल जिस पर मस्जिद एवं मुसाफिर खाने का निर्माण किया गया वो भूमि शासकीय भूमि है। आई रिक्वेस्ट योर लॉर्डशिप टू स्टॉप हियर। They say, because you have a permission from the collector to construct, therefore we hold that this is a government land. With great respect, Lord, it's an absurd finding. तथा नजूल मेंटेनेंस ग्राम रेजिडेंसी क्षेत्र के खसरे में उक्त भूमि सीआरपी लैंड मस्जिद लेके चूंकि नजूल भूमि शासकीय भूमि होती। So this is the presumption on which the Tehsildar proceeds, Lord. And Lord, now the next page number, Lord, 18, page 18, Lord, your Lordship, sir. Yes. The last paragraph which begins somewhere from the word prayog. ऊपर से सर तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं लाइन, लास्ट पैरा की 7वीं लाइन, पेज 18। Yes. प्रयोग के लिए पृथक रखी गई भूमि धारा 300-233 क के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में लोक प्रयोजन के लिए पृथक रखी गई भूमि नजूल भूमि नहीं है। मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 100 नजूल भोपाल दिनांक 25/4/2005 के पत्र के अनुसार रेजिडेंसी एरिया क्षेत्र इंदौर में स्थित भूमियां जो पूर्व रेजिडेंसी एरिया अथॉरिटी के नाम से दर्ज थी, उत्तर प्रदेश शासन में समाहित हो चुकी है एवं नजूल भूमि के रूप में शासकीय नियमों के तहत प्रशासित है। अतः इस क्षेत्र की समस्त भूमियों को राज्य सरकार की मानकर नजूल भूमि की तरह प्रबंधन किए जाने हेतु निर्देशित किया। नॉट दिस सीम्स टू बी बेसिस 2005 में आदेश पारित हुआ है, which is not a part of this record, which I was never confronted with the residency lands, Lord. And Lord, the lastly, 19 the first para, Lord. ये मेरे पक्ष में डिसाइड करा है, हालांकि इंप्यून ऑर्डर बाद में मेरे खिलाफ करा। पेज 19 Lord, फर्स्ट पारा बिंदु क्रमांक 2। Yes. बिंदु क्रमांक 2 जी, इस बिंदु के संबंध में अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। नगर निगम भवन अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अनावेदक को मात्र 9087 वर्ग मीटर भूमि पर मुसाफिर खाने के निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है। तत्कालीन कलेक्टर महोदय के द्वारा में अनापत्ति प्रदान की गई। इस कारण से मुसाफिर खाना अनधिकृत कब्जे की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन इसके अतिरिक्त शासकीय भूमि पर मस्जिद, नंबर दिस इज द फाइंडिंग इन माय फेवर, लगभग 67 से 300 वर्ग मीटर पर निर्मित थी। ये गूगल इमेज एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रमाणित होता है मेरे पक्ष में, लेकिन सैटेलाइट इमेज से प्रमाणित है कि मस्जिद प्रशासन के द्वारा अनधिकृत रूप से शासकीय भूमि पर विस्तार करते हुए बाउंड्री वॉल मस्जिद का विस्तार कर दिया। Your Lordship, is the reasoning and the basis of finding is a satellite image contrary to the document which I find. And last, Yes. the Lord, on one hand they say that you are declared an unauthorized document which was within jurisdiction, and the last line, Lord, the Tehsildar says कि हम demolition कर देंगे. But this point, with great respect, is highly objectionable in my submission for the reason that the Tehsildar has no business to hold any construction to be illegal or excessive or beyond jurisdiction or beyond permission.
he has a permission to decide a 482 application. That again is incorrectly done. In the last 3 lines में they say राजस्व अनावश्यक अतिक्रमण नहीं हटाने की दशा में अतिक्रमण हटाकर वस्तुएं प्रस्तुत कर। So they have Tahsildar has protected me from masjid as well as Musafir Khan. Yes. Extra protection they are treating it in this. Yes, my lord. Now the question that I put to myself, but मस्जिद की मूल संरचना एवं मुसाफिर खाना के अतिरिक्त बनी बाउंड्री वॉल अन्य निर्माण प्रक्रियाओं को बेदखल की जाएगी। जी सर, मैं वही निवेदन कर रहा हूँ जी And मुसाफिर खाना is protected. सर। ना मैं वही निवेदन कर रहा हूँ सर, एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन। बाकी there is no document, there is no permission, there is nothing on record. Yes, Lord. Now, let us assume what the state government is saying, the Tehsildar is saying. The question that I put to myself with the Lord's permission is it open to the Tehsildar to declare a construction illegal construction, Lord? Or is the corporation the only body to decide so? Yes. Who is saying that? Yes. Anything else? Yes, Lord. Only Lord, last submission. If your Lordship are not inclined to relegate me to the alternative committee, Lord, your Lordship may consider my prayer for giving me a status quo for order till my stay application by the appellate authority is decided, Lord. In case your Lordship is inclined to. That's the only request. Yes, Mr. Sethi. My lord, first, my lord, I'm addressing to the factual aspect, my lord. The demolition process and the removal of encroachment process has already been initiated at 7:15 in the morning and has been completed at 9 a.m. in the morning itself, my lord. Thereafter, my lord, on their verbal request, my lord, further 7 days time has been granted to them, my lord, that jo bhi remaining hai, that they are removing it voluntarily, my lord. This is the factual aspect which I'm bringing to this honorable court's notice, my lord. Second, on balance, my lord. Learned senior. Okay, record your statement. You have given 7 days time. My lord, I am having respond number 3 Tehsildar with me. You know, I have taken instructions. His name You can maintain the 7 days. You maintain the status quo. By that time, you will prefer an appeal along with an stay application. Before that, I have taken specific instructions, my lord. हाँ बीच में होली है तो we can grant you 15 days at the moment. Lord, but if I'm not crossing my limit, would your Lordship pass also direction to decide my application within that time, Lord? Otherwise, they'll keep it pending. 15 days will get over, Lord. Only that. After limit 15 days, you file and they will decide it. Yes, I'll be grateful. My lord, for that, my lord, my short submission is there. My lord, writ court has specifically mentioned, my lord, in the order which they are impugning in writ petition, my lord. Yes. Page number 28, my lord. Paragraph number 17. 17. Yes. Applying the aforesaid crystallized legal principles to the factual matrix of the present case, this court is of the considered opinion that the complex and disputed question of fact relating to the title, work character, and precise demarcation of the property cannot be satisfactorily resolved in the present writ proceedings. The petitioner is attempting to seek what is essentially a declaration of title, cloaked as a challenge to an eviction order, bypassing the statutory appeal machinery provided under the MPLRC and or under the work act or work tribunal or civil court, my lord. So, my lord, my only respectful submission is, my lord, that our right to raise the preliminary objection regarding the maintainability shall be remain with us, my lord, because where in whichever forum they are presenting the appeal, my lord, because they are disputing the both the parties are disputing the title and the ownership, my lord. So that cannot be adjudicated, my lord, in revenue proceedings, my lord. That is my only submission at this point of time. You will be respondent everywhere, so you can raise all of That's all. As per your information, when this construction was raised, My lord, this construction, the improved construction, My when lord. it was raised, when it was raised, what is the time when this construction was raised? 2000 During the year of between they were raising it continuously, my lord, from year 2012 till 2025, my lord. have you taken any action against your officers? दोस्तों ये थी 28 फरवरी की वो ऐतिहासिक सुनवाई जिसने साबित कर दिया कि भारत में न्याय की कुर्सी कभी सोती नहीं है। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस द्वारकाधीश बंसल के इस एक फैसले ने न केवल एक ढांचे को गिरने से बचाया बल्कि कानून की सर्वोच्चता को भी कायम रखा। अब सबकी नजरें 13 मार्च की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। आपको क्या लगता है, क्या प्रशासन की कार्रवाई जल्दबाजी में थी? अपनी राय नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। ऐसे इलीगल अपडेट के लिए आपका अपना चैनल यूट्यूब कोर्ट 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।